Recording now. Good evening, student. Today we are going to study about the important topic that is the photosynthesis. इस photosynthesis को हम किस तरह से स्टडी करेंगे? photosynthesis में सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अर्ली एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ photosynthesis. सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड डिफरेंट photosynthetic pigment that participates in the photosynthesis reaction. Third topic that is we are going to study about that is the light reaction. In that light reaction we will study about cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Then in dark reaction we will study about the C3 cycle, C4 cycle, CAM pathway and C2 cycle. And later on lastly we will discuss about the different factors that affect on the photosynthesis. ओके सो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो है उसे हम स्टडी करने जा रहे हैं. सो आज का टॉपिक होगा द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? Photosynthesis, it is the anabolic process which is a that is the physicochemical, or we can say the photobiochemical process, which is anabolic and endergonic, in which the organic compound like the carbohydrate that is C6H12O6 it is synthesized from the inorganic substances like H2O and CO2 in the presence of sunlight or the any type of the visible light in by using the different light capturing pigments. So that is the definition of the photosynthesis. In short, photosynthesis, it is the production of the food by capturing the sunlight in the presence of sunlight by the chloroplast. That is known as the photosynthesis. In simple language, you can write this definition. Now, anabolic process, it is the constructing reaction. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है CO2H2O इनके कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट बनता है. सो इट इज द एनाबॉलिक प्रोसेस. इट इज द सिंथेसिस प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. It is endergonic reaction. Endergonic reaction, it is the reaction in which the energy is involved, in which the energy is accepted, in which the energy is participating. ओके यहाँ पर एनर्जी जो है रिएक्शन के भीतर इंटर होती है, एब्सॉर्ब की जाती है, उसे हम एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं. नाउ वी नो द सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. आप सभी को फोटोसिंथेसिस की जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है वो पता है. वो क्या है? दैट इज 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight inside the chloroplast. It gives the that is C6H12O6 and 6O2 molecules. तो ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये आप सभी को पता है. And during this photosynthesis reaction the carbon dioxide it is reduced into C6H12O6. यहाँ पर आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और इसे रिडक्शन होने के लिए जो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे वो इस वाटर मॉलिक्यूल से मिलेंगे. ओके दैट इज द स्पेशली द हाइड्रोजन, इट इज द हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल से उसे हाइड्रोजन मिलेंगे, याद रखना. ओके देन दिस H2O मॉलिक्यूल इट अंडरगो द ऑक्सीडेशन. देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन. याद रखना क्योंकि यहाँ पर CO2 का रिडक्शन होता है C6H12O6 में और H2O का ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है. एंड दिस ऑक्सीजन इट इज यूज this oxygen it is used by the animals for performing their breathing, respiration, cellular respiration. Now that is the single step reaction of the photosynthesis. ये जो single step reaction है photosynthesis की, क्या ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है? नहीं. These single step reaction which is written here, it completes, it involve the light and dark reaction. ओके सो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो लाइट रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो डार्क रिएक्शन होता है. So photosynthesis it involve the two important step that is the light reaction in the presence of sunlight, oxidation of the water to release the oxygen, and dark reaction that convert or reduces carbon dioxide into the sugar. We know that the high means the rate of photosynthesis or the productivity of the autotropic it is very much higher in aquatic environment. Okay, near about we know that the 90% of photosynthesis it is occur in aquatic environment, especially it is performed by the algae. Okay, then remaining 10% of the photosynthesis is performed by the terrestrial ecosystem. Then sugar is the
sugar is the main product, oxygen is the byproduct, that is the important one. Then next one, क्या सभी प्रकार के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं या किस प्रकार की ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनके बारे में हमें देखना होगा. What is that? Now, in this example, you can see this one is, that is the Cuscuta reflexa plant, and this Cuscuta reflexa plant, it is the parasitic, it is the true, or we can say the obligate stem parasitic plant. It do not synthesize the food material, it do not perform the photosynthesis, and it depends on the other plants, shrubby plants or the trees for for its nutrition. It sucks the nutrition from the host plant. Then fungus, they lack the chlorophyll pigment, therefore they are also heterotrophic one. They take their nutrition by performing the absorptive mode of nutrition by degrading the dead bodies of the plants and animals. Now, this is the Euglena. We know that Euglena is the mixotropic. In the presence of sunlight, it performs photosynthesis, but in the absence of sunlight, it becomes the heterotropic. Now here we have the three different examples. The green plants, they perform the photosynthesis, but the non-green plant, they depends on other plant for taking their nutrition. Such a plants are known as the, that is the parasitic plant. They are non-green in color. Okay, Indian pipe plant is also the heterotrophic plant. We can say the parasitic plant. Okay, then the green parts of the plant, it perform the photosynthesis, because the green part means the presence of the chlorophyll pigment in it. ठीक है, तो चलिए अगला part. Now we are discussing about the early experiments in the photosynthesis. तो इस photosynthesis में जो early experiment हुए हैं वो कौन से हैं उसके बारे में हमें discuss करना है. Now we are going to study about all these different अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. जो उस फोटोसिंथेसिस की सिंगल स्टेप रिएक्शन जो थी, उस सिंगल स्टेप के रिएक्शन को डिस्कवरी करने के लिए इतने सारे डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है, जिसमें हम प्रेस्लीज एक्सपेरिमेंट, जैन इंजन हाउस का जो एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे. दैट इज जूलियस बॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट. देन दैट इज द स्टार्च इज द विजिबल प्रोडक्ट, ऐसे इन्होंने कहा था. दैट इज द Angelman experiment, that is the first light absorption spectrum of the light experiment. C.V. Van Niels की जो reaction है, Robin Hill, Ruben Kamen and Arrhenius, that is Arnold's, then Emerson and Arnold, as well as Emerson and Levy's experiment. तो इन सभी एक्सपेरिमेंट को हमें देखना होगा. सबसे पहले that is the Priestley's experiment. Priestley's experiment, after this experiment the discovery of oxygen taking place. Presley discovered the oxygen, ऐसा हम कहते हैं. And earlier this oxygen were known as dephlogiston. Dephlogiston means it fresh the environment. The gas that fresh the environment is known as the dephlogiston. Now प्रेस्ली ने क्या किया था? प्रेस्ली ने अपने एक्सपेरिमेंट में माइस लिया था और इस माइस को बर्निंग, ओके, इस जार के भीतर क्लोज इन्वायरमेंट में रखा है. एंड कैंडल, burning candle is kept inside. After some time the candle get extinguished and the mice were get died. जो भी चूहे उन्होंने रखे सब मर गए. और कहना ये था कि इस बलती हुई जोत के धुएं की वजह से या फिर दैट इज द पॉइजनस पॉइजनस गैस की वजह से ये जो चूहा है ये मर गया, ऐसा कहना था. ठीक है, मीन्स इसके भीतर की जो एयर है वो, दैट इज द फॉल एयर, बैड एयर की वजह से ये चूहा मर गया है, ऐसे उसके ऐसा कहने का मतलब था. देन इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया. इसमें उन्होंने पुदीना प्लांट, दैट इज द मिंट प्लांट उन्होंने रखा, और इसे रखने के बाद जो जोत थी, दैट इज द flame of the candle remained burn, and the rat inside this closed jar, it remained alive. So इसकी वजह से हुआ ये कि जो प्लांट यहाँ पर रखा है, इस प्लांट ने जो फॉल एयर है उसे फ्रेश कर दिया था, ऐसा उनका कहना था, जिसकी वजह से ये जो चूहा है वो जिंदा रहा. और जिस जिस गैस की वजह से ये एयर फ्रेश हुई है उसे उन्होंने डीफ्लॉजिस्टन कहा. दैट इज द डिस्कवरी ऑफ डीफ्लॉजिस्टन इज नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन. आज हमें पता है जो ये फ्रेश एयर इस प्लांट के द्वारा जो इस जार के भीतर जो रिलीज की जाती है वो होता है ऑक्सीजन. तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई है, दैट इज द डीफ्लॉजिस्टन, ऐसे हम उसे कहेंगे.
ओके, चलिए अगला पार्ट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या हुआ है, सीयर जैन इंजन हाउस ही हैड केप्ट द algae इनसाइड द वाटर अंडर द illumination ऑफ द लाइट। और इस अलगी को जब इल्यूमिनेट इस वाटर इन्वायरमेंट में रखा गया, ओके, और इस पर लाइट इल्यूमिनेट की गई या लाइट के प्रेजेंस में इस अलगी के द्वारा कुछ बबल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, एंड दैट बबल्स आर नथिंग बट द ऑक्सीजन बबल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द green parts of the plant it release the oxygen. It is the experiment that is performed by the Jan engine house. Jan engine house ने बताया कि green parts of the plant they release the oxygen in the presence of the light. ओके okay? और अगर हम यहाँ पर अगर इस लाइट को अगर डार्क में तब्दील कर देते हैं, तब जैन इंजन हाउस ने देखा कि यहाँ पर नो एनी बबल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ग्रीन algae इन वाटर इन्वायरमेंट। तो इसमें ऑक्सीजन इस डार्क डार्क इन्वायरमेंट में इस अलगी के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। ऐसा ये जैन इंजन हाउस इनका एक्सपेरिमेंट है, इसे याद रखना है। इसका मतलब ये है only the oxygen bubbles are released. Green parts of the plant it release the oxygen only in the presence of the photon, that is the light. Okay, चलो अगला point। The next experiment that is the Julian Bonsack experiment. Julian Bonsack इन्होंने बताया कि the first visible product of the photosynthesis is the starch. Okay, तो दैट इज द स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट जिसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। हमें स्टार्च अगर हम हम इस स्टार्च के ग्रैन्यूल्स को लार्ज साइज, स्मॉल साइज, इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल कैन बी विजिबल इन पाइसम सटाइवम प्लांट। ये हमने जेनेटिक्स में स्टडी किया हुआ है। ओके, द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज द एंजल मैन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट वन। ये क्या एक्सपेरिमेंट है देखिए, सी एंजल मैन्स एक्सपेरिमेंट इट इज नोन एज द फर्स्ट एक्शन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो एक्शन एक्सपेरिमेंट क्या था उसे डिस्कस करेंगे आगे जाकर। नाउ सी व्हाट ही हैड केप्ट द ग्रीन algae in water environment and these algae, okay, in these algae in the environment of this algae in this water the aerobic bacteria is kept। ओके, तो इस ग्रीन algae को वाटर इन्वायरमेंट में लिया गया है और साथ ही साथ इस वाटर इन्वायरमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया भी लिए गए हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मींस द बैक्टीरिया दैट परफॉर्म देयर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। they require the oxygen for their living, such a bacteria is known as the aerobic bacteria। ओके, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा वहां पर ये बैक्टीरिया ये उस ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे या उसकी ओर लोकोमोशन करेंगे और इकट्ठा होंगे और उसी जगह पर इनका रिप्रोडक्शन का रेट भी बढ़ेगा। सो तो एंजल मैन इन्होंने ग्रीन algae ली है वाटर इन्वायरमेंट में और उसमें एरोबिक बैक्टीरिया भी लिया है। देन आफ्टर दिस द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम he had illuminated he had illuminated these aquatic aquatic environment by the visible light। ओके, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम से उन्होंने इस पर क्या किया, इस पर प्रिज्म के द्वारा उस विजिबल लाइट को 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट किया है। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ 5 लेते हैं, ठीक है। और उन्होंने देखा कि आफ्टर इल्यूमिनेटिंग आफ्टर illumination of the visible part of the spectrum in aquatic environment on the green algae, the large number of the aerobic bacteria they aggregate and form their many individuals or their colony in the blue and red region। इसका मतलब ये है, ये जो अलगी है ये ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है, ये बताने वाला एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द एक्शन एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट एक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द एंजल मैन। यहाँ पर एक्शन क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। और इस एक्शन को इंडिकेट कैसे किया जा रहा है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा, यहाँ पर कंक्लूजन मिल रहा है कि ब्लू और रेड रीजन में ही ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है।
क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया उस जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और उस जगह पर वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं और अपनी कॉलोनी बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो नजर आ रही है ब्लू और रेड में। इसका मतलब है द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, द फोटोसिंथेटिक एक्शन, इट ऑकर्स इन blue and red part of the spectrum or blue or red part of the visible part of the spectrum or white light। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ब्लू और रेड लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। सो इसी वजह से यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की एक्शन ब्लू और रेड लाइट में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेसिस एक्शन को यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ओके, चलिए अगला पॉइंट। सो ये था टी एंजलमैन। ओके, टी एंजलमैन इनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, और दिस एक्सपेरिमेंट इट आल्सो इंडिकेट दैट the two different wavelengths of light means these blue and red wavelength of light it is accepted by the chlorophyll A and chlorophyll B। तो absorption spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B it absorb blue and red wavelength of light। chlorophyll A और B ये blue और red light को absorb करती है, ये आगे जाकर पता चलता है। ओके, सो फंक्शन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का होता है, इसीलिए इसे हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। सो नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज दैट इज द कॉर्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट, इसे वैन नील भी कहा जाएगा। सो दिस वैन नील ही हैड परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द दैट इज autotropic type of bacteria, that is chromacium and chlorobium। chromacium and chlorobium are the chemi-autotropic type of bacteria, chromacium and chlorobium। okay, that is chromacium, that is the purple sulfur bacteria, chlorobium is the green sulfur bacteria। इसमें नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, chromacium is purple sulfur bacteria, chlorobium is the green sulfur bacteria। ओके, तो ये दो बैक्टीरिया इन्होंने लिए हैं, कौन, दैट इज द कॉर्नेलियस वैन नील इन्होंने। okay, and these bacteria they depends on the sunlight for performing the photosynthesis, but these chromacium and chlorobium these bacteria no doubt they are chemoautotropic bacteria, they synthesize the glucose by their they perform the synthesis of the glucose, but they are not able to release the oxygen, but they do not release the oxygen, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। ओके, सो इसके पीछे रीजन क्या है हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। नाउ हाइड्रोजन फ्रॉम द सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट्स। ये हेडिंग आपने याद रखनी है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है, और ये कैसे होता है इसे हम देखेंगे। इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है, जो जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है like the H2S hydrogen sulfide gas, it is the easily oxidizable compound and it reduces the कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए इन दिस इक्वेशन दिस H2S इज इट इज द इजीली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, इट रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द C6H12O6। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। okay, it require the light. Chromacium and chlorobium, okay, they require the light, they are autotropic chemoautotropic photosynthetic bacteria, they synthesize their own glucose molecule, okay, by oxidizing the hydrogen sulfide gas, and reduces the carbon dioxide into the sugar, and this sulfur is released into the environment. Now, in this reaction, oxygen is not released. Why? The chromacium and chlorophyll, although they are photochemoautotropic bacteria, but why they are not able to release the oxygen like the green plants? Now, we know that after performing different experiments, studying their different that is the harvesting, that is the photo harvesting different elements, the scientists they are come to know that these chromacium and chlorobium they lack photosystem second। ये फोटोसिस्टम सेकेंड क्या होता है इसे हम आगे जाकर देखेंगे। दिस फोटोसिस्टम सेकेंड इट इज बाउंडेड विथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग
कॉम्प्लेक्स। ओके, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC कहेंगे। एंड दिस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इट इज अटैच्ड विद द photosystem second, and this oxygen evolving complex it is responsible for the oxidation of the water molecule, and from the water oxidation of the water molecule, this photosystem second it releases the oxygen. Here the photosystem second is absent, therefore these chromacium and chlorobium they depends on H2S, not on the H2O molecule. Okay, so that is the very important one. This is the important experiment. Okay, now next one, the next experiment is the very important one, that is the Robin Hill's experiment. This Robin Hill it used the Robin oxidants, different types of the oxidant he used in his experiment. ओके तो ये डिफरेंट रॉबिन्स ऑक्सीडेंट कौन से होते हैं और क्या होते हैं और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया. नाउ दिस रॉबिन हिल्स एक्सपेरिमेंट it is also known as the photolysis of water experiment. It is also known as the light reaction. इसे light reaction भी कहा जाता है क्योंकि in the presence of the sunlight the water oxidation of water is taking place. Then these after oxidation of the water the release of oxygen occurring. Okay, in the presence of light the oxidation or ionization or the breaking of the water is taking place to release the H plus ion and oxygen. That reaction is known as the Robin Hill's reaction. इसे Hill's reaction कहा जाता है. Now in this Hill's reaction what he had used, he had isolated the thylakoids from the plant, green plant like the Stellaria media. Okay, then it belongs to the family Caryophyllaceae. He had isolated the thylakoid, then it maintained the CO2 free closed system, then used the different types of the Hill's artificial reagent that known as the Hill's oxidant. तो ये एक्सपेरिमेंट देखिए कैसा है. नाउ जो थैलाकॉइड होते हैं, व्हाट इज मीन बाय थैलाकॉइड, दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट. दिस क्लोरोप्लास्ट इट हैज द सच टाइप ऑफ द thylakoidal stalk that is known as the grana. These each compartment is known as the thylakoid. This thylakoid bunch of thylakoid it form the grana. ये हमने already that is the cell, the structural and functional unit of life, इसमें हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टडी किया हुआ है. तो इस क्लोरोप्लास्ट में जो स्टॉक होते हैं थैलाकोइड के उसे हम ग्रेना कहते हैं, और एक जो स्टॉक होता है उसे हम थैलाकोइड कहते हैं, उसे लैमेली भी कहा जाता है. ग्रेना लैमेली एंड स्टोमा लैमेली आर द थैलाकोइड्स. ओके, तो उन्होंने ये थैलाकोइड लिया है और CO2 फ्री क्लोज सिस्टम फॉर्म की है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. सो देखिए इस थैलाकॉइड पर डिफरेंट तरह के लाइट दैट इज फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, द ATP सिंथेज एंजाइम, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा. तो ये सारे डिफरेंट तरह के जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ATP सिंथेसिस करने वाले एंजाइम्स है, ये इस थैलाकॉइड पर प्रेजेंट होते हैं. चलिए ये आगे जाकर हमें डिस्कस करना है इन डिटेल स्टडी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. नाउ द हील्स आर्टिफिशियल रिएजेंट जो थे वो आर्टिफिशियल इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि DCPIP, डाइक्लोरोफिनॉल, इंडोफिनॉल इसे हम कहते हैं, फेरिक साइनाइड, हीम दैट इज द हीमोग्लोबिन एज वेल, नेचुरल H प्लस. ओके, सो ये सारी चीजें जो है ये DCPIP, फेरिक साइनाइड, हीम, ये क्या है, दीज आर द आर्टिफिशियल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. कभी पूछा जाए तो याद रखना, हील्स आर्टिफिशियल रिएजेंट इट इज यूज फॉर द that is the acceptor. The Hill's reagent is acts as the hydrogen ion acceptor. कभी क्वेश्चन आए तो याद रखना, Hill's reagent they acts as the hydrogen ion acceptor. But the फिर क्वेश्चन आता है what is the natural hydrogen ion acceptor. सो नेचुरल जो हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्टर होता है वो होता है NADP. ओके, NADP. सो व्हाट इज मीन बाय दिस NADP. NADP क्या होता है, दैट इज नोन एज द निकोटिनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ओके, दैट इज नोन एज द NADP. सो इट इज द नेचुरल हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर. ओके, ये DCPRP, फेरिक साइनाइड, हीम दैट इज डाइक्रोमेट एटसेट्रा, डिफरेंट तरह के जो हील्स रिएजेंट यूज किए गए थे, ये सारे हील्स ऑक्सीडेंट कहलाते हैं.
हिल्स ऑक्सीडेंट में किसका किसका नाम है? That is, these are the different Hill's oxidant, that is ferric cyanide, that is the chromate ion. These are the, that is we can use the benzoquinone, quinone, etc. That is DCPIP, डाइक्लोरोफिनॉल, इंडोफिनॉल, यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन का हिम भी इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन आयन एज ए एक्सेप्टर ऑफ द हाइड्रोजन आयन. Hill's reagent acts as a hydrogen ion acceptor and it acts as the, that is Hill's oxidant. कभी पूछा जाए तो याद रखना. ओके, विच इज द नेचुरल H प्लस आयन एक्सेप्टर? NADP, निकोटिनामाइन अडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. इट इज द नेचुरल H प्लस आयन एक्सेप्टर. चलिए अगला पार्ट, नेक्स्ट वन. सो यहां पर देखिए एक्सपेरिमेंट. दिस इज द कंटेनर, ए क्लोज सिस्टम दैट लैक द कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज द CO2 free system. Okay, then it is added with the water and this water it contain DCPIP, dichlorophenol, indophenol. Its solution is the blue color. तो ये वाटर ब्लू कलर का है. ओके, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, कैसे पता चलेगा? ये ब्लू कलर जो है, ओके, दिस ब्लू कलर इट बिकम्स कलरलेस. ये जो ब्लू कलर है ये कलरलेस हो जाएगा. तो समझ में आ जाएगा कि इसका क्या हो गया है. इट DCPIP. ओके, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द H2O टेकिंग प्लेस. ओके, एंड इट DCPIP गेट रिड्यूस. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं. नाउ इट इज एडेड विद द थैलाकॉइड. ओके, CO2 फ्री सिस्टम है, इसमें DCPIP ऐड किया है, वाटर ब्लू हो गया है, देन थैलाकॉइड ऐड किए गए हैं. तो ये तीनों चीजें, ये कंडीशंस यहाँ पर मेंटेन की गई है. ओके, दीज आर द थैलाकॉइड, इट इज एडेड हियर. ओके, देन नेक्स्ट वन आफ्टर दिस, इसके बाद नेक्स्ट वन. अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ द सनलाइट, under the illumination of the sunlight, this H2O thylakoid it perform. thylakoid ने क्या किया? thylakoid ने, that is the PS second. thylakoid in the sense, थैलाकॉइड में अभी हमने देखा आपको कि थैलाकॉइड में PS फर्स्ट, PS सेकेंड, दैट इज फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड होती है. अभी हमने छोटी सी डायग्राम में देखा था. सो वहां पर जो फोटोसिस्टम सेकेंड होती है, वो इस वाटर को, इस वाटर को स्प्लिट करेंगे. This water it get oxidized in the presence of the, that is the light, into 2H plus ion and 2 electron and release the half O2. बच्चों इस रिएक्शन को आपने याद रखना है हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. This reaction is known as photolysis of water and it is also known as the Hill's reaction. इसे Hill's reaction कहा जाएगा. Okay, so this is the Hill's reaction that prove that the oxygen is evolved from the H2O, not from the carbon dioxide. इस रिएक्शन से पहले, रॉबिन हिल के रिएक्शन से पहले, ये माना जाता था कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है. मगर हिल्स रिएक्शन ने ये प्रूव किया कि H2O is the source of oxygen evolved during the light reaction, that is known as the Hill's reaction. नाउ अब यहाँ पर जो H प्लस और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, इसे कौन एक्सेप्ट करता है? DCPIP, विच इज द ब्लू सॉल्यूशन, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड H प्लस आयन, देन DCPIP इट गेट रिड्यूस एंड इट बिकम्स कलरलेस. जो ब्लू कलर है वो कलरलेस हो जाता है. ये इंडिकेट करता है कि H2O का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन और H प्लस आयन DCPIP ने एक्सेप्ट किए हैं. ये कैसे पता चलता है? ब्लू DCPIP कन्वर्टेड इनटू कलरलेस, ये इंडिकेट होता है. Okay, so that is the DCPIP reduce, DCPIP, blue DCPIP is reduced into colorless DCPIP by accepting the electron and H plus ion after the photolysis of water. Okay, so ये reaction कहलाती है, that is the Hill's reaction. ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है, लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है. ओके, so this is the ferric ion. When ferric ion accept the electron, it is converted into ferrous, means ferric reduced into ferrous after accepting the electron. ओके, सो इस तरह के जो डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेंट इस्तेमाल किए हैं, सो इस रिएक्शन में जो ए लिखा गया है, ए इज द एक्सेप्टर ऑफ H प्लस आयन. ओके, सो ये ए जो है इट इज द एक्सेप्टर ऑफ द H प्लस आयन आफ्टर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. तो देखिए ए यानी दैट इज द DCPIP, इसने H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन वाटर के स्प्लिटिंग के बाद एक्सेप्ट किया है. सो दैट इज द हिल्स रिएक्शन, ये आपको याद रखना है.
Okay, that is what is the natural acceptor of the H plus ion electron, that is NADP. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. It is the natural electron and H plus ion acceptor. Okay, so ये था that is Hill's reaction. It proved that that is the photosynthesis, oxygen is released from the water, then H2O, it is the source of water, it get oxidized to release H plus, and electron, it is accepted by the electron acceptor, that is NADP. Okay, so ये बहुत ही important